Hello everyone, welcome to Affinity Digital. Today we will be discussing the solution of mini static number 7. So let us begin with the first question of zoology. Question number 151. Stellar distance can be measured in, this is from evolution chapter, and the answer will be, it will be measured in light year. And जो kilometer है, per second है, Chandrasekhar limit, these are not the correct. Question number 152. During evolution, the first cellular form of life appeared before how many million years? It is 2000 million years. Non-cellular form of life, 3000. Cellular form of life, 2000 million years. Okay. Moving to the next question. During the origin of life, which among the following was not found in free form? It is oxygen. Oxygen हमेशा वो combined form में रहा, वो ओजोन बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो H2O बना, लेकिन उस दौरान वो फ्री फॉर्म में नहीं रह पाया बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी एक्टिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. असर्शन रीजनिंग में चले आते हैं. डार्विन फिंचेस शोज अ वेराइटी ऑफ बिग suited for eating large seeds, flying insect and cactus seeds. The reason is ancestral seed eating stock of Darwin finches radiated out from the South America to different geographical areas of the Galapagos Island, where they found the competitor-free new habitat. Yes, the reason is true. दरअसल क्या हुआ कि जो mainland है ना, mainland that is South America, उसमें जो ओरिजिनल स्टॉक था, उनका जो बिग मॉडिफिकेशन का था, वो था सीड ईटिंग टाइप. ठीक है, दे आर द सीड ईटर. जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह में ओरिजिनेट होता है और वो माइग्रेट कर जाता है टू अनदर एरिया, डिस्टेंट एरिया, और वहां पे उसका जो एंसेस्ट्रल स्टॉक जो यहाँ पे गया, वो अगर फर्दर प्रोलिफरेशन करे इनटू नंबर ऑफ वेराइटीज, तब हम इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं. वी कॉल इट एज एडाप्टिव रेडिएशन. व्हाई? क्योंकि उसका ओरिजिन एक जगह, वो अपना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ पे शो करे? अलग एक आइसोलेटेड एरिया में. उस चीज को कहा जाता है एडाप्टिव रेडिएशन. तो यहाँ पे हम लोग वही चीज को देख पा रहे हैं कि डार्विन फिंचेस जो है अलग अलग बिग का मॉडिफिकेशन शो कर रहा था, बिकॉज जो एंसेस्ट्रल स्टॉक देखा जाता है इन द मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, वो माइग्रेट किया गैलापागोस आइलैंड में, और वहां पे कोई कंपटीटर ना होने की वजह से वहां पे अच्छे से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन परफॉर्म किया. So the answer, correct answer will be 1. That is, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Question is, Stanley Miller performed his experiment for explanation of the origin of life in which of the year? Is in 1953. 155, the correct option is 1953. Moving to the next one. The cranial capacity of the Homo habilis is option 3 is the correct one. It is around 650 to 800, या फिर 600 to 800 cc. Moving to the next, assertion reasoning. Restriction endonuclease are also called as molecular seizure. क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर सकता है. So reason is, when fragments generated by the restriction endonuclease are mixed, they are joined together due to their sticky end. So no doubt it is true, but it is not the correct explanation of the assertion. Hence, we will search for the both assertion and reason is true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. So 157, the answer is 2. 158, in the ancestry line of Tyrannosaurus, which ancestor is present? It is Brachiosaurus. जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन एंड इट इज फ्रॉम पेज नंबर 130, जहाँ पे इस डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, जो टायरानोसोरस रेक्स है, उनका नीचे के लाइन में
जो ऑर्गेनिज्म दिया गया है दैट इज ब्रेकियोसोरस। तो उस लाइन में जो इवॉल्व हुआ है फर्स्ट इज द ब्रेकियोसोरस, उसके बाद उसी इवोल्यूशनरी लाइन में टायरानोसोरस आता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Moving, which among the following are the examples of homologous organ? It is the wings of butterfly and birds, वो अलग अलग origin से belong करते हैं, it is analogous. Flippers of penguin and dolphin, that is also incorrect. Eyes of octopus, is the forelimb of whales, bat, cheetah and human, they all belong to mammals. इनका origin same है, humerus रहेगा, tibia and not tibia and fibula, radius and ulna रहेगा, और यही पैटर्न जो है हर किसी में देखा जाता है। Another assertion and reason, a wide range of contraceptive methods are available for family planning because natural method includes condom, diaphragm, etc. while barrier method includes the methods like periodic abstinence. तो उल्टा दे दिया गया है, incorrect है, reason is totally incorrect, and there is wide range of contraceptive methods available for family. That is true, the assertion is true, but reason is totally incorrect. It's false. So 160 option 3 is the correct one. 161, the theory of spontaneous generation states that life arose from non-living form, life from living form, life can arise from both living and non-living, life can arise from non-living things, only it is the correct option. Moving to the next one, 162, fitness according to Darwin refers to is the reproductive fitness of an organism, जिससे कि जो stronger individual है वो ज़्यादा बच्चा produce करेगा in the next generation, जबकि weaker individual they will produce the less individual. Alfred Wallace worked in Malay archipelago is the correct option. So question number 164, in gel electrophoresis DNA fragments are separated. The reason is DNA is negatively charged, so it moved towards the anode under electric field and also under the influence of charge. So both of the reason, assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. So 164 option 1 is correct. So question number 165, who gave the definition of biotechnology? It is the European Federation of Biotech. Then question number 166, what are the two views does the definition of the biotechnology encompasses? It is both the traditional and the modern molecular biotechnology. Moving to the next question, question number 167 is an autonomously replicating circular extrachromosomal DNA. Of course, it is the plasmid, which is extrachromosomal DNA. The process by which a foreign DNA is introduced into bacteria, the process is known as what? That is known as ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे कि बैक्टीरिया के अंदर दूसरे फॉरेन जीन को डाला जाए, राइट। मूविंग टू द असर्शन रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 169, ट्राई प्रोटीन आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर क्रिस्टल प्रोटीन, करेक्ट। Reason, in acidic environment of insects midgut, the tri protein are solubilized and then release toxic core fragments after proteolytic action. Totally incorrect. So the assertion is true, but the reason is false. 169, 3 is the correct. Insertion of recombinant DNA within the gene encoding for beta galactosidase leads to, इंसर्शन करने से क्या हो जाएगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का लेक्सर जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे कि जो प्रोसेस होगा इनएक्टिवेशन का उसको हम कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन सेक्स ऑफ द बॉडी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट इज बाय द फादर, क्योंकि फादर का जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, वो दो तरीके का होता है, एक एक्स एंड वाई, एंड कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, इफ इट इज कैरिंग एक्स then it will lead to the production of the female baby, and if it is carrying Y it will lead to the production of the male baby. So it is determined by the father. Then question number 173, in human male the testes are extra abdominal and lie in the scrotal sac. This is true, and the scrotum acts as a thermoregulator and keeps the testicular temperature lower by 2 degrees Celsius for normal spermatogenesis. So both the assertion and reason is correct explanation of the
are true and they are the correct explanation of the reason. Question number 174, the seminal plasma is rich in option 3, fructose, calcium and certain enzymes. Question number 175, what causes the onset of the puberty in males? Of course, puberty कब start होता है? जब hypothalamus high मात्रा में या फिर high amount में GnRH, gonadotropin releasing hormone produce करने लगे. So it is increase in the GnRH by hypothalamus. Epididymis is located on the posterior surface of the testis. Very important question. कि वो कौन से surface में located है? And it is given in your NCERT. Then is assertion reasoning. The bulbourethral gland is the male accessory gland. Reason, its secretion helps in the lubrication of the penis, thereby facilitating the reproduction. Yes, that's why it is the male accessory gland. So it is option 1, 177. Option 1 is the correct one. Then during pregnancy, the level of thyroxine increases several fold in maternal blood, जो कि माँ के बॉडी को तैयार करता है ताकि वो प्रेगनेंसी को कैरी कर पाए. Also it helps in the growth of the fetus. Okay, moving to the next question, 179. Sperm have several components out of which the function of acrosome is, acrosome में कई तरीके का एंजाइम्स होता है जो कि एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हुए फर्टिलाइजेशन में मदद करता है. सो इट इज द रिलीज ऑफ द एंजाइम दैट ब्रेक्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 180. The reproductive and the child health care program is for reproduction related areas. रीजन, assertion और रीजन के बीच एक बिकॉज लगा के पूरा सेंटेंस पढ़ना. ठीक है, देन इट मेक्स सम सेंस. Reproductive and child healthcare program is for reproductive related areas because it deals with creating awareness among various reproduction related aspects. Yes, both are correct and the reason is the correct explanation. Moving to the next question, the division of the primary oocyte results in, it is unequal division of the cell. Unequal cells are produced. A smaller haploid secondary oocyte, smaller नहीं होगा haploid, unequal larger haploid secondary oocyte and a smaller haploid fuller body. So this is correct. Yes, both are haploid. ये diploid भी नहीं होगा. Haploid secondary oocyte. So this is the correct explanation. Menstruation is triggered by an abrupt decline in the amount of progesterone. Progesterone के fall होते ही menstruation होता है and this occurs at the end of the menstrual cycle by about 25th day. तो 25th day को already corpus luteum degenerate हो जाता है and by 28th day तक progesterone घटने लगता है and it leads to menstruation. What does RCH stands for? Very easy, is reproductive and child health care. Question number 184. Interstitial cell is present in the region outside seminiferous tubules called interstitial space. Correct, because interstitial cell provides nutrition to the Sertoli cell. Incorrect. So assertion is true but reason is false here. So question number 185. During parturition, the fetal ejection reflex triggers the release of, तो जो mild ejection reflex होता है वो ऑक्सीटोसिन थोड़ा बहुत पेन कॉज करेगा जो कि ब्रेन सेंस करेगा एंड द ब्रेन विल स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन. एंड ऑक्सीटोसिन जब जाके यूटरस के रिसेप्टर में बाइंड होता है देन इट स्टार्ट्स कंट्रैक्शन ऑफ द यूटरस. सो इट इज ऑक्सीटोसिन दैट कॉजेस द from the maternal pituitary that will cause the remaining part of the rest of the parturition process. The ideal contraceptive for female who want to delay pregnancy or space pregnancy, ज़्यादातर केसेस में IUD यूज किया जाता है. It is widely used in urban society. Okay. Then question number 187. Statutory ban on amniocentesis in India was necessary because क्यों ये necessary हो गया? क्योंकि यूं तो जो process है amniocentesis का वो कोई भी genetic defect को determine करने के लिए, detect करने के लिए
बहुत ही यूजफुल है. हाउएवर सम ऑफ द फैमिलीज जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, जिनको सिर्फ बेटा चाहिए होता है, वो लोग क्या करते थे, इससे डिटरमाइन करके कि ये बच्चा फीमेल है या फिर मेल है, वो अबॉर्ट करवा देते थे अगर वो फीमेल चाइल्ड थी तो इट यूज टू कॉज द फीमेल फीटिसाइड, और उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया. So it can be used for prenatal sex determination to the determination of the fetus leading to the female feticide. And because of this reason, उसमें statutory ban लगा दिया. Question number 188. Fimbriae or are finger-like projection of the infundibulum part of the oviduct, which is closest to the ovary. Yes, true. And the reason is they are important for the collection of the ovum, because they are important for the collection of the ovum after ovulation from the ovary. Yes, both the reason and assertion are true, and reason is the satisfactory explanation of the assertion. Evolution is not directed process in the sense of determinism. The reason is evolution is the stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in organism. Yes, this is directly from NCERT. Evolution कभी भी determined नहीं होता है कि वो nature जो है वो किसको select करेगा. It is completely undetermined process जिसमें कि it is completely based on के mutation कैसा हो रखा है ऑर्गेनिज्म में. अगर वो बेनिफिशियल हुआ तो नेचर उसे सिलेक्ट करेगा, और नेचर कैसा चेंज कर रहा है अपने आप को, वो भी इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो यस इज ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Moving to the next one, in which of the following statement are correct regarding the female reproductive cycle in non-primate mammals? Cyclical change during the reproduction are called estrocycle. Correct. First menstrual cycle begins at the puberty and is called menopause. No, it is incorrect. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Yes, it is true. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. That's why may word use किया गया है. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. That is true. menarche और menopause के बीच बार बार menstrual cycle होता रहता है. तो except B, all are correct. Yes, A, C and D. So 190, option 1 is correct. Question number 191. A person should be considered as reproductively healthy if they have healthy reproductive organ but are emotionally imbalanced. No, assertion is incorrect. Reproductively healthy या फिर healthy उसको कहा जाता है जो कि not only health wise physically सिर्फ fit ना हो, socially भी fit हो, mentally भी fit हो, behaviorally भी fit हो. तो सिर्फ वो हेल्थ वाइज ठीक है लेकिन वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, नॉट हेल्दी. दिस स्टेटमेंट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. दिस स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाज गिवन बाय WHO. रीजन असर्शन करेक्ट नहीं है, रीजन भी इनकरेक्ट हो गया. तो बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 192 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. के कहा गया है कि एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जहाँ पे तुमने कैथोड लगाया है, एक साइड में एनोड लगाया है, ठीक है, और तुमने कुछ फ्रेगमेंट ऑफ DNA को पास करने के लिए अलाउ किया गया है. तो कहा गया है कि A + B = C, जहाँ पे A जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट B से ज़्यादा है. डेफिनेटली C तो ऑफकोर्स उससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि A + B जो है वो मिलके बन रहा है C. तो सबसे जो कम वेट का है वो है B, ठीक है. उसके बाद आएगा A, और इन दोनों की मिक्सचर का जो वेट है वो है C का, और D जो है वो C से भी वो ज्यादा है मात्रा का है. तो इट इज द हेवीएस्ट वन, तो वो कैथोड की तरफ रहेगा, और जो सबसे लाइटर है वो है B, वो एनोड की तरफ रहेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इसको स्किप नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है. सो इट इज BACD इज द करेक्ट ऑप्शन. In BT cotton, the BT toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to the alkaline pH of the insect gut. Okay, and the remaining are not true. Moving to the next one, which of the following is used for
क्लोनिंग वेक्टर, इट इज डीएनए ऑफ सैल्मोनेला टाइफोमेरियम, नहीं जो क्रोमोसोमल डीएनए उसको यूज नहीं किया जाता बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी कैरेक्टरिस्टिक. प्लाज्मिड को यूज किया जाता है बिकॉज इट बियर्स फ्यू कैरेक्टरिस्टिक. So it is TI plasmid जो एग्रोबैक्टीरियम में होता है. Not these are what ampicillin and tetracycline resistant loci. This is meant for giving the resistant. So they are the selectable marker. इस पार्ट को हम लोग यूज करेंगे फॉर कम्बिनेशन, नॉट फॉर क्लोनिंग पर्पस. क्लोनिंग वेक्टर की तरह नहीं, क्लोनिंग में यूज होगा बट नॉट एज अ वेक्टर. ओराई माइनस PBr322, तो ओराई को अगर सेपरेट कर दोगे, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर, तो वो वेक्टर कैसे बनेगा? ऑल्दो PBr322 इज करेक्ट, लेकिन ओराई को माइनस करने के लिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन में है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज TI प्लाज्मिड. देन बायोलिस्टिक और जीन गन इज यूजफुल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और उसको पास करके कोई भी फॉरेन जीन को अगर डालना है या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए को डालना है तो हम लोगों को उसको पेनिट्रेट करते हुए जाना पड़ेगा, जिसमें हाई वेलोसिटी चाहिए. दैट इज प्रोवाइडेड बाय द जीन गन. देन RNAi is a mechanism to silence gene with the help of the double-stranded RNA. Then which protein has been produced generating a transgenic shift that is used for the replacement therapy for individual at the risk of emphysema? It is alpha-1 antitrypsin. And question number 198, a permanent cure for ADA deficiency could be the introduction of the gene isolated from the marrow cell producing ADNA at the early embryonic stage. तभी जाके पॉसिबिलिटी है कि बच्चा जो है उसको परमानेंट ट्रीटमेंट मिलेगा. बाकी का जो प्रोसेस है वो नो डाउट यूज किया जाता है इन जीन थेरापी. एंड दिस इज द जनरल, दिस टू मेथड, एंजाइम रिप्लेसमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये जनरल मेथड है जिसमें ट्रीटमेंट तो होगा लेकिन पूरी परमानेंट क्योर नहीं होगा. So periodic abstinence is a natural method of contraception when couples avoid or abstain from coitus during the period of menstrual cycle. जब ovulation जो है is most likely to occur and वो कब किया जाता है? menstrual cycle का 14 day and it's a set of 10 to 17 days. यहाँ का 4 दिन, यहाँ इसके बाद का 4 दिन को अवॉइड किया जाएगा, जिस दौरान ओव्यूलेशन का हाई चांसेस होता है. और उस दौरान अगर इंसेमिनेशन हुआ देन इट मे लीड टू फर्टिलाइजेशन. सो इट इज बेस्ड ऑन सम kind of like what is the lifespan of sperm, what is the lifespan of ovum, when does the ovulation takes place, and that's why it is considered as a most appropriate legalized method of contraception. and उस दौरान जो interaction है या फिर coitus है उसको avoid किया जाए. ठीक है, so the next question and the last question, so identify the correct match. Tumulin, yes, correct, it is the first therapeutic recombinant DNA product approved for human use. RNAi, silencing of the mRNA with the help of the double-stranded RNA. Rosie is a transgenic ship. It is not a transgenic ship. It is the transgenic cow जो कि alpha-1 antitrypsin produce करता है. So this is the incorrect option. The golden rice is vitamin enriched rice variety, and 200 question. Option 3 is the correct one. All the best for you.